welcome back to my channel, and today I am going to show you another acrylic color painting tutorial. So let's jump into the painting. Today's materials I am going to use are one stencil paper, one masking tape, one mechanical pencil. This is the color palette to mixing the color. These are the colors I am going to use. This is the ultramarine blue, this is the light blue, this one is a cadmium yellow, this is a grass green, burnt ochre, dark cadmium orange, and this Van Dyck brown. And these are the flat brushes, and this is the round brush. This is the glass bottle to clean the brushes. One is the rug. फर्स्ट स्टेप है, जब भी हम कोई लैंडस्केप ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले हमें we have to create one horizontal line. ताकि so this is the horizontal line, and here this part will be the water part, and here I will draw one mountain. This is the second mountain, is behind this mountain, and here mountain cliff is there behind the and this is the land. Here पहले हम एक land draw करते हैं. This is the land, and I'll place one tree. Draw one tree here. This is the sketch. Now I start coloring. First I'm going to use this flat brush number 6. So this is too dry. Dip the brush little bit. थोड़ा सा ही पानी में डालना है ब्रश को, और रग पे थोड़ा सा हल्के हाथ से आपको ब्रश को ऐसे घुमाना है. अब मैं ब्रश को कलर लेती हूँ और ब्रश को इसी तरह से आपको घुमाना है. Blend the color this way. आपको थोड़ा सा पानी लेना है और इसको कलर को ब्लेंड करना है. बहुत लोग पूछते हैं कि ब्लेंडिंग कैसे करेंगे, तो इसी तरह से आपको ब्लेंड करना है कलर. जितना भी अब ब्रश घुमाते जाओगे कलर वैसा ही ब्लेंड होता जाएगा. अब जब ड्रॉ करोगे आपको ये नहीं सोचना कि आपका कलर या तो आपका पेंटिंग कैसा है. जस्ट करते जाओ, आप प्रोसेस को एंजॉय करो. अगर ड्राइंग आपका ख़राब भी हो गया तो वो भी कभी कभी वो एक मास्टरपीस बन जाता है. अब हम ये जो वाटर है, वाटर को कर रहे हैं स्प्रेड द कलर. पापा पर जब डार्क है तो मुझे नीचे भी थोड़ा सा डार्क लग रहा है. आई एम मिक्सिंग दिस कलर्स. क्लीन द ब्रश. ये साइड
ये सब जब डार्क है इसीलिए मैंने इसका ही रिफ्लेक्शन, ये जब वाटर है, ये वाटर एरिया है तो इसका ही रिफ्लेक्शन यहाँ पे हो रहा है। तो इसको मैंने ये साइड को मैंने ज़्यादा डार्क रखा है और इसको धीरे धीरे यहाँ से ब्लेंड कर दूंगी। जो शेडो है उस पे हम डार्क करते हैं। Now mix with light green and blue. Let it dry. इसको हम ब्लू कर देते हैं। एक ब्राउन एंड डार्क ब्राउन मिक्स करके सेम हम यहाँ पे भी यूज करेंगे। I'm taking round brush. This is number 6. मुझे अभी जो ब्रंच है उसको क्रिएट करना है। इसे टैप करना है विथ येलो